Okay, today what we'll do is we'll study vapor compression cycle. See, in yesterday's video we have done vapor compression cycle. In today's video what we will do is we will study about vapor absorption cycle. Okay, now see, as the name itself indicates, vapor compression cycle में क्या था, we were using a compressor, right? A compressor was there, a heat exchanger was there, evaporator was there, and expander was there. Heat energy, where was the effect? Refrigeration effect कहाँ हो रहा था? Refrigeration effect evaporator में हो रहा था. Similarly यहाँ पे vapor absorption cycle है. देखो ना, in the name itself you can understand vapor is absorbed. What is that vapor? Vapor is nothing but the refrigerant. Okay, the refrigerant is absorbed in this cycle. Therefore we are having an vapor absorption cycle. Now see, vapor absorption cycle में क्या है, यहाँ पे we are replacing a compressor. We are replacing. Okay, now see here, we are replacing the compressor by using what? By using an absorber, a heat pump and generator. ये तीन जो कंपोनेंट है हम यहाँ पे कंप्रेसर की जगह यूज़ कर रहे हैं. कहाँ? वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में. अभी देखो, आई विल शो यू वन ब्लॉक डायग्राम. Okay, see. Okay, now see here. Now see, this is my condenser. What are the components which I used? Okay, there is a condenser. Okay, what are the components we are using here? See, what are the main components which we are using here? Where is condenser, evaporator है, throttle wall है. throttle wall nothing but your expander. अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स कौन से हैं देखो, एक absorber, generator and a pump. These three components are excess we are using instead of what? Instead of a compressor. अभी देखो what happen is, in this we will start from this point 5. Okay, the high pressure refrigerant vapor the high pressure refrigerant vapor comes into the condenser. Okay, now what is condenser? A condenser is a device wherein we condense the vapor that is coming inside. Okay, this high pressure refrigerant vapor enters into this condenser, and what happens to this vapor? It gives out the heat. When the heat is rejected, यहाँ पे क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है. हीट रिजेक्ट हुआ, वेपर इज कंडेंस्ड इनटू व्हाट? इनटू लिक्विड. सो दिस at the time where the liquid comes out, at that point 6, it will be vapor is converted into liquid. यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट रिजेक्ट हो रहा है. वी आर रिजेक्टिंग द हीट टू द एटमॉस्फेयर. ओके, नाउ सी, दिस लिक्विड, दिस हाई प्रेशर लिक्विड इज एक्सपांडेड इन दिस थ्रॉटल वॉल. अभी देखो, हम अगर लिक्विड को एक्सपांड कर रहे हैं तो व्हाट हैपेंस फर्दर? इट चेंजेस इट्स स्टेट. Okay, now at the time at which it enters into this evaporator, it will be what? Liquid plus vapor. This liquid plus vapor मिक्सचर जो है यहाँ पे evaporator में क्या होता है? evaporator में evaporate हुआ. कैसे evaporate हुआ? It absorbs the heat in this area. क्या हो रहा है यहाँ पे? रेफ्रिजरेंट का हीट एब्जॉर्ब हो रहा है. जैसे ही इसका हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट इज एडेड टू वॉट? टू द रेफ्रिजरेंट. फिर ये एरिया कूल हुआ कि नहीं? दिस एरिया विल बी कूल्ड. यहाँ पे क्या हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ? कहाँ पे हुआ? एवापोरेटर में. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा हीट ऐड हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा था? कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रहा था. अभी नाउ एट दिस पॉइंट, एट द पॉइंट 8, देयर विल बी लो प्रेशर वेपर, बिकॉज इट इज लो प्रेशर वेपर इज देयर फ्रॉम, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एब्जॉर्ब द हीट एंड एक्सपांड होकर आ रहा है. तो दिस लो प्रेशर वेपर एट पॉइंट 8 इज टेकन इनटू द एब्जॉर्बर. एब्जॉर्बर क्या करेगा? एब्जॉर्बर में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन प्रेजेंट रहता है अंदर. सो एज सुन एज दिस लो प्रेशर वेपर कम्स इनटू द एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब्स दिस लो प्रेशर वेपर एंड प्रोड्यूसेस व्हाट? प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन. वीक सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है. कहाँ पे? एब्जॉर्बर में. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेपर एब्जॉर्प्शन. ओके, दिस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन अभी क्या हुआ? इज दिस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन सेकंड दिस पंप. पंप में क्या करते हैं? हम इसको प्रेशर ऐड करते हैं. दिस हाई प्रेशर सोल्यूशन इज टेकन बैक टू द जनरेटर. नाउ इट इज जनरेटर हियर. ओके, सी, इन दिस एब्जॉर्बर व्हाट हैपेंस? वी आर रिजेक्टिंग द हीट. Okay, the heat is rejected to the what? To atmosphere. It is denoted by QAB. It is rejected. कितने हीट रिजेक्ट हुए? एक QAB में हीट रिजेक्ट हुआ, एक कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हुआ. ऐड कितना हुआ? एक एवापोरेटर में ऐड होता है. अभी जनरेटर. सी, नाउ दिस हाई प्रेशर दिस सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन पंप से हम हाई प्रेशर ऐड करके कहाँ जाता है? वो जनरेटर को जाता है. जनरेटर में क्या होता है? हम इसका प्रेशर तो इंक्रीज हुआ है बट हीट इज लेस बिकॉज वी रिजेक्टेड द हीट. यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था हीट. कहाँ पे? एब्जॉर्बर में. सो दिस जनरेटर में हम इसको हीट ऐड करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. ओके, सो वेरी अगेन दिस हीट एडेड. दिस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इज टेकन बैक टू द कंडेंसर एट
0.5 and the cycle repeats. Okay, see how many heat added are there here. We are adding the heat at point in one is we are adding the heat in generator, another is we are adding the heat at evaporator. Now see, this was the cycle which was vapor absorption cycle का ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किए. अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है. See what we are doing. Okay, now see what we are doing. We are making the energy balances. Okay, what is energy balance means? The amount of heat rejected should be equal to the amount of heat added. अब मैंने पहले आपको बोला था हीट ऐड कहाँ हो रहा था. एक तो जनरेटर में हीट ऐड हुआ, एक वन वॉज हीट एडेड एट पम्प, और एक कहाँ पे one was heat added at the compressor. Okay, see how we are writing the heat reject. How many other? See, QA plus QP plus QH, these three terms are heat added. Okay, now where is the heat rejected? The heat is rejected. Absorber में एक heat add हुआ, pump में एक heat add हुआ, फिर एक यहाँ पे QH, where it was in generator. These were three heat added. Now how much is it rejected? QC, compressor में एक heat reject हो रहा था, हमारा absorber में एक heat rejected हुआ. ये दोनों क्या है? Net heat rejected QR है. These are my total heat rejected. If I wanted specific heat rejected, I should draw by mass of the refrigerant. Okay, now when I divide the whole equation by mass of the refrigerant, how much I'm getting? Small q. It is per unit rate. QA plus QP plus QH is equals to QC plus QAB, that is equals to QR. Okay, now this was the energy balancing. Now what is that? I want to write the beta. Now what is beta? The overall coefficient of performance. Coefficient of performance COP हम कहाँ यूज़ कर रहे थे? वेपर कंप्रेशन में कर रहे थे ना. सिमिलरली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किससे डिनोट कर रहे हैं? बीटा से. वो क्या है? सेम है. एनर्जी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन एनर्जी सप्लाइड. अभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ हो रहा था? इन एवापोरेटर. QA अपॉन QH प्लस QP, और if heat is rejected means QR minus QA. Now see what is now pump work is very little here. Our pump work is very little. So what we are doing? So what I'll do, I'll neglect this pump work. So what is beta now? Beta will be QA by QH. Okay. Now what I'll do, I'll divide and multiply by QW on both the sides. So what I'm doing, I multiply and divide by W on both the sides. So W upon QH is equal to Q upon W. Now what is W upon QH? Work done upon heat supply, nothing but thermal efficiency into refrigeration effect upon energy input is your what? Coefficient of performance. So beta is equal to what? Efficiency thermal into coefficient of performance. Okay, now see here, maximum coefficient of performance कब होता है? When your TR, TAB, TAC, what is condenser pressure, absorber condenser weight. When condenser temperature and absorber temperature are same, TR and that is equal to T, that is equal to TAC, we are having the maximum what? Coefficient of performance. How it is given? Beta max is equal to what? Efficiency thermal into coefficient of performance. What is efficiency thermal? Heat supplied minus heat rejected upon heat supplied. TH minus TR upon TH into coefficient of performance क्या है हमारा? Refrigeration effect upon work input. TA upon TR minus TA. This is beta max when your condenser pressure and absorber pressure are same. We are going to get minimum maximum. अभी देखो, when these temperatures, that is absorber temperature और condenser temperature equal नहीं है, तभी क्या होगा? बीटा मैक्स. बीटा मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस होता है TH उल्टा रेसिप्रोकल विल बी व्हाट? TH minus TAB upon TH into TA upon TC minus TA. This is your beta max. तो what is TH? TH is equal to generator temperature. TAB क्या है? absorber temperature है. TA क्या है? evaporator temperature है. TR, that is equal to TC, that is nothing but a condenser temperature. Okay, see, today what we have done, we have see in this chapter or module, we have done with all the type of derivations. Carnot cycle हुआ, reverse button cycle हुआ, vapor compression हुआ, vapor absorption हुआ. What is remaining? Remaining is your problems. Then next is psychometric. That psychometric will do in upcoming classes. Now from tomorrow what we will do is we will start with the problems.